Hello students, it's grade 4, block 3, The Torch. Your English textbook. I'm reading the lesson, The Torch, on page number 22. The author name is Radha Pyari Sandhir. The author name is Radha Pyari Sandhir. In this lesson, the author has given the story of a scientist that the scientist searched an object that changes the things into gold. So let's read the story and understand what does this title mean and how the torch is working to change the object into the gold. So I am reading the first paragraph. Please pay your attention on the line. Once in a big city there lived an old scientist named Dr. Ganesha, who loved to help people. One late summer evening, he accidentally found a way to turn objects into gold. It happened when the electricity went off and his torch was not working. Using a few materials lying here and there, he made a new type of battery that and inserted it into the torch. The torch started working at once. एक बार लाइट चले जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर गणेशा जो साइंटिस्ट थे उनकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी. फिर उन्होंने इधर उधर के जो भी मटेरियल था उससे एक बैटरी बनाई और उसे टॉर्च में डाल दी. तो द टॉर्च स्टार्टेड वर्किंग एट वंस. तो टॉर्च फिर से स्टार्ट हो गई. लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद ही फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टॉर्च एंड वेंट टू स्लीप. वो भूल गए टॉर्च बंद करना. इट ले ऑन हिज डेस्क shining on a pen stand. The next day he found that the pen stand had turned to pure gold. Over the next few days he tried his new invention on other objects in the house. उस रात वो टॉर्च को बंद करना भूल गए. तो उन्होंने बाद में देखा कि वो टॉर्च एक पेन स्टैंड पे शाइन कर रही थी. रात भर उस पर उसका लाइट गिरा तो वो पेन स्टैंड जो है वो गोल्ड में चेंज हो चुका था. तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कुछ ये अपना इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन मतलब खोज, नई खोज. तो ये नई खोज दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर ट्राई किया. घर के अदर ऑब्जेक्ट्स पर उन्होंने ये इन्वेंशन ट्राई किया. He found that they turn into gold. और वो ऑब्जेक्ट्स भी सब गोल्ड में चेंज हो गए. If the torchlight was shone on them for at least half a day, अगर आधा दिन तक वो टॉर्च लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट पर गिरती थी तो वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में चेंज होता था. See in this picture, Dr. Ganesha and these objects are turned into gold. All these objects are turned into gold. Dr. Ganesha was thrilled. Thrilled means excited and happy. He thought about all the good such an invention could do for humanity. Dr. Ganesh बहुत खुश हो गए. उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी खोज उन्होंने मानवता के लिए ढूंढ निकाली है जिससे वो हर आदमी की मदद कर सकते हैं. He decided to help people as much as he could. और उन्होंने ठान ली कि वो पीपल्स की हेल्प करेंगे. So come on page number 23.
one day, while he was taking a walk, he saw a woman sitting on front steps of her small house and crying silently. Dr. Ganesha went up to her and asked, "My dear lady, why are you crying?" एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर गणेशा उनके घर के सामने वॉक कर रहे थे, तो घर के सामने एक लेडी रोते हुए उन्हें दिखी। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। स्निफलिंग स्निफलिंग मीन्स इनहेलिंग हेविली, जोर जोर से सांस लेते हुए वो लेडी उन्हें बोली। द वुमन लुक्ड अप एट हिम एंड सेड, इट्स बीन 6 months सिंस आई हैव लॉस्ट माई जॉब। 6 महीने हो गए मैंने अपना जॉब खो दिया है। आई कैन नो लॉन्गर पे माई डॉटर स्कूल फीस, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। अभी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं मेरे लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स ले सकूं। इवन द फूड इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस नाउ। माई डॉटर इज सिक एंड आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट टू टेक हर टू द डॉक्टर। मेरी लड़की बीमार भी है और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकूं। अभी खाना भी हमारे लिए बहुत महंगा हो चुका है। What will I do? She started crying all over again. Feeling sad for the woman, Dr. Ganesha placed his hand gently on her shoulder. अब डॉक्टर गणेशा को उस पर दया आई और उन्होंने उनका हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला, देयर थिंग्स विल गेट बेटर, डोंट वरी। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ही सेड काइंड। डॉक्टर गणेशा पुल्ड समथिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट। इट वॉज अ गोल्डन एप्पल। उन्होंने एक गोल्डन एप्पल अपने जेब से निकाला और उसे दिया। सी इन दिस फोटो you will see that Dr. Ganesha is giving golden apple to that lady. Here, take this. Sell it and take your daughter to the doctor. The woman's eyes opened wide as she saw the shining apple. जैसे ही उसने वो शाइनिंग एप्पल देखा तो वुमन की आंखें चौंक गई। थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। Where did you get this from? She asked. आपको ये कहाँ से मिला? उसने पूछा। Dr. Ganesha told her about his accidental invention of the torch that turned things into gold. डॉक्टर गणेशा ने अपनी खोज के बारे में उसे बताया। The woman said, "Thank you so much for your kindness. My name is Maya and I live in this small house with my daughter." मेरा नाम माया है और मैं डॉक्टर के साथ यहाँ पर इसी घर में रहती हूँ। द नेक्स्ट डे डॉक्टर गणेशा सेट आउट टू विजिट चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स एन इंस्टीट्यूशन टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। अनाथ आश्रम हम बोलेंगे जहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है। तो डॉक्टर गणेशा अनाथ आश्रम में गए। ऑन हिज शोल्डर hung a small bag which held 2 gold items for the children in the orphanage. तो उनके कंधे पे एक स्मॉल बैग टंगा हुआ था और उसमें 2 चीजें बच्चों के लिए थी जो कि गोल्ड की थी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 4 ब्लॉक 3 द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द टॉर्च, पेज नंबर 26 of your textbook. See the first question. On what objects did Dr. Ganesha try the magical torch? Dr. Ganesha tried the torch on the objects like computer, lamp, diary, paperweight and pen stand. Second question. Why did Dr. Ganesha decide to use the torch to help people? Dr. Ganesha was a generous man and helpful, so he decided to use the torch to help the people. Then, the third question, the fourth one, what was magical about the torch?
What was magical about the torch? The torch was magical because when the light of the torch fall on those things, that was converted into the gold. Question number 5. Why was the woman crying? How did Dr. Ganesha help her? The woman was crying because she lost her job from the last 6 months and she had no money to pay the school uniform and books of her daughter, and the food is too expensive for her. And how did Dr. Ganesha help her? Dr. Ganesha gave the golden apple to the woman for money and said her that she could take her daughter to the hospital.